हाय एवरीवन, कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम लोग टाइप वाइज सिंपल हैज़ हैव को देखेंगे, जिसको आप पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं ना। मेरे पास ये है, तुम्हारे पास वो है, ऐसे करके सेंटेंसेस पढ़ेंगे। पीछे पीछे चीज़ों को रिपीट करें। आप वाक्य के लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो वीडियोज़ में लास्ट तक बने रहें और सिर्फ हर सेंटेंस के पीछे पीछे चीज़ों को रिपीट करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। आई हैव मतलब मेरे पास ये है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। अब मैं सिर्फ इंग्लिश में बोलूँगा। आई हैव को शॉर्ट फॉर्म में हम आई बोल सकते हैं। तो आई हैव अ बुक, आई हैव अ ब्रदर, आई हैव 2 ऑफर्स, आई हैव एन ईयर एग। उम्मीद करता हूँ आप मेरे पीछे पीछे रिपीट कर रहे होंगे। अब आइए यू हैव मतलब तुम्हारे पास है। यू हैव अ शार्प माइंड, यू हैव अ स्लिम बॉडी, you have a sore throat, you have a busy routine, you have Sanjay's phone and new clothes। हिंदी आपके सहूलियत के लिए दिए हैं। आइए नए सेंटेंसेस। we have headache, है ना, हमें सिर दर्द है। we have pimples on our faces, we have new clothes, we have 5,000 rupees, we have energy। वीडियोस को देखते रहें और पढ़ते रहें। दे हैव अ पेन इन देयर नी, दे हैव मेन गोल्स, दे हैव एन ऑफ डे, और यू कैन से दे हैव अ हॉलीडे, दे हैव पेशेंस एंड नॉलेज, दे हैव इंस्टा एंड ट्विटर अकाउंट्स, ही हैज़ 2 brothers and 2 sisters। अब हम जितने भी सेंटेंस बनाएंगे सब में हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। ही हैज़ को शॉर्ट फॉर्म में ही हैज़ बोलते हैं। ही हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क, ही हैज़ अ स्टमक एक, ही हैज़ 10 fingers, he has a bad habit, she has a new car, she has many options, she has an exam on Thursday, she has cold, she has enough water, संजय हैज़ एन ओल्ड पेयर ऑफ शूज़। नाम के साथ हैज़ लगा सकते हैं। काजल हैज़ 500 फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। इट के साथ हैज़ लगाएं। इट हैज़ मैनी फीचर्स, किसी नॉन लिविंग थिंग चीज़ के लिए। इट हैज़ मोर देन 55 ब्रांचेस। एवरीवन हैज़ सम प्रॉब्लम्स। आइए अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें हम डोंट हैव और डजंट हैव को कवर करेंगे। सबसे पहले डोंट हैव वाले सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं। आइए करते हैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई डोंट हैव लॉट्स ऑफ मनी, आई डोंट हैव फेसबुक अकाउंट, आई डोंट हैव योर फोटो एंड हिज नंबर, आई डोंट हैव एनी एनिमी, you don't have a sharp mind, you don't have a slim body, you don't have a sore throat, you don't have a busy routine, you don't have Sanjay's phone and new clothes। हिंदी आपके सहूलियत के नीचे रखे हुए हैं तो आप उनको पढ़ सकते हैं। We don't have headache, we don't have pimples on our faces, we don't have new clothes, we don't have 5,000 rupees, we don't have energy, they don't have a pen in their knee, they don't have many goals, they don't have an off day, or we can say they don't have a holiday, they don't have patience and knowledge, they don't have Insta and Twitter accounts, he doesn't have a house, he doesn't have manners, he doesn't have time and money, he doesn't have fever and cough, he doesn't have pencils, pens and erasers, she doesn't have 2 bottles of milk, she doesn't have a stomach ache,
She doesn't have feelings. She doesn't have shame. She doesn't have a cup of coffee and slices of bread. अब आते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको बेसिक हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देना है। इसकी शुरुआत हमेशा क्या से होती है। सहूलियत के लिए सेंटेंसेस दिए हैं, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में प्रैक्टिस करें आप। डू आई हैव एनी प्रॉब्लम? डू आई हैव लॉट्स ऑफ मनी? डू आई हैव अ फेसबुक अकाउंट? डू आई हैव योर फोटो एंड हिज नंबर? डू आई हैव एनी एनिमी? डू यू हैव अ शार्प माइंड? जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो आप आंसर में बोल सकते हैं यस आई हैव। डू यू हैव अ स्लिम बॉडी? आंसर यस आई हैव। डू यू हैव अ सोर थ्रोट? डू यू हैव अ बिजी रूटीन? डू यू हैव संजय's फोन एंड न्यू क्लॉथ्स? डू दे हैव अ पेन इन देयर नी? आंसर क्या हो जाएगी? यस दे हैव। और नो में अगर आपको बोलना तो नो दे डोंट। डू दे हैव मैनी गोल्स? डू दे हैव एन ऑफ डे और डू दे हैव अ हॉलीडे? डू दे हैव पेशेंस एंड नॉलेज? डू दे हैव इंस्टा एंड ट्विटर अकाउंट्स? डू वी हैव एनी प्लानिंग्स फॉर द फ्यूचर? डू वी हैव ऑल द फैसिलिटीज? डू सम पीपल हैव देयर आधार एंड पैन कार्ड? प्लूरल के लिए हम यूज़ करते हैं ये, सिंगुलर के लिए, नाम के लिए डज। डज संजय हैव एक्सपीरियंस? डज एवरीवन हैव देयर ओन हाउस? डज ही हैव अ हाउस? डज ही हैव मैनर्स? डज ही हैव टाइम एंड मनी? डज ही हैव फीवर एंड कफ? डज ही हैव पेंसिल्स, पेन्स एंड इरेजर्स? Does she have 2 bottles of milk? Does she have a stomachache? Does she have feelings? Does she have shame? Does she have a cup of coffee and slices of bread? अब हम कुछ WH फैमिली के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, जो अभी आपने सिंपल इंटेरोगेटिव बनाया, इससे पहले आप हाउ मैनी या फिर हाउ मच का यूज़ हम करके सेंटेंस बनाएंगे। हाउ मैनी का यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे बुक्स, पेन्स। और हाउ मच का इस्तेमाल उस चीज़ के लिए कर सकते हैं जिसको आप नहीं गिन सकते, जैसे वाटर, मिल्क, एक्सपीरियंस एंड ऑल, राइट। सो हाउ मैनी डेज डू आई हैव? हाउ मैनी बैंक अकाउंट्स डू यू हैव? How many projects and investors do we have? How many cousins do they have? आपने देखा, वही सिंपल इंटेरोगेटिव का पैटर्न रखना है, थोड़ा सा हाउ मैनी हाउ मच लगा देना। अब हाउ मच मनी डज ही हैव? हाउ मच नॉलेज एंड एक्सपीरियंस डज शी हैव? हाउ मच वर्क डज संजय हैव? तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी सिंपल हैज़ हैव को पढ़ा है, जिसमें पास है वाले सेंटेंसेस बनाए हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, सेंटेंसेस को सिर्फ लास्ट तक मेरे पीछे अगर आप सिर्फ रिपीट करते हैं, सो इफ़ यू रिपीट आफ्टर मी, डैम श्योर कि आपको 100% इसका प्रॉफिट होगा। जल्दी ही नई वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।